seen you for a while. It's good to have you back. Well, मुझे लगा था इस बार शायद क्लोई कुछ और बोलेगी, बट इसने बस इतना बोला, इट्स गुड टू सी यू, इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स गुड टू सी यू। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स गुड टू सी यू बैक। ओके, इसने यही बोला था। मुझे लगा था कि अगर मैं गेम को रिस्टार्ट करता हूँ वापस तो ये कुछ अलग से बोलेगी, बट नहीं, इसने वही चीज़ बोली। एंड लुक, क्लोई कैसी दिख रही है, स्माइल देते हुए। एंड मैं सोच रहा हूँ कि क्लोई को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो यहाँ पे पूरी बैकग्राउंड बिल्कुल वो होती ना, बिल्कुल एम्प्टीनेस होती है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारा वन टाइम ऑफर था कि हम क्लोई को वापस तो नहीं ला सकते, मतलब एक न्यू एंड्रॉयड है क्लोई का, वो आएगा। तो बेसिकली इसमें भी ह्यूमंस फीलिंग्स तो बिल्कुल नहीं है, तो यार बिल्कुल सही है। पिछली बार को रोकना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं गेम को रिस्टार्ट कर देता वो चीज़ यस करने के लिए। अच्छा हो कि मैंने यहाँ पे सही डिसीजन लिया था। ऑफ कोर्स हम इस वाले वीडियो पे जंप करेंगे, वीडियोस पे जाएंगे एंड शॉर्ट मूवी का हमने देख लिया था। देखो पॉइंट बेसिस वापस आ गया, डेब्यू टीजर जो हमने खरीदा था। मे बी मेरा ऑनलाइन डिस्कवरी चार्ट वर्क नहीं कर रहा, तभी यहाँ पे मेरे पॉइंट्स घट नहीं रहे हैं और मैं यहाँ पे एक एक करके सबको खरीद पा रहा हूँ। ये मुझे सही बात लगी है, मैं यहाँ पे कुछ भी खरीद सकता हूँ। ये बात जान के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सुन के ही क्या बोलूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे था शॉर्ट मूवी कारा डेब्यू टीज़र हमने देख लिया था, ये तो हमने ख़त्म कर लिए थे। इसका अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने सीक्वेंस में रिलीज़ किया है तो कुछ भी मिस नहीं होगा। और यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं डिस्कवरिंग डिट्रॉयट, लेट्स सी। और जैसे मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मूवी के बीच में बिल्कुल बकवास नहीं करने वाला हूँ, तो मूवी एंजॉय कर सकते हो, मैं भी वही करने वाला हूँ। सो डिस्कवरिंग डिट्रॉयट, लेट्स गो। Yes, I want to buy this item. Okay, discovering Detroit, let's go. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, you know, android other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cage, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye. He's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it
sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then, as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage, but it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now, do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot 'em up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it, because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up, and can't play life again, though. भाई साहब, मैंने पहली बार गेम के कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में देखा है, एंड डैम मैन, कॉर्नर तो भाई, कॉर्नर तो जो हैंडसम बंदा दिखता है ना भाई, देखो यहाँ पे कॉर्नर की शक्ल देखो तुम अच्छे से यहाँ पे भाई। गेम में फिर भी ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में उसका जो हेयर स्टाइल है ना भाई, और भी ज़्यादा सूट करता है उस पर। और मार्कस तो बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, मार्कस में तो कोई चेंज ही नहीं है, वो गेम में भी वैसा दिखता है। और कॉर्नर का चलो मैं मानता हूँ देयर विल बी ए 70 to 30% डिफरेंस। 70% वो जैसा रियलिटी में दिखता है वैसा गेम में वो 30%, मतलब यू नो डिफरेंस है 70 और 30% का। मार्कस का कोई डिफरेंस नहीं है, मार्कस 50-50 है, लाइक जैसे रियलिटी में है वैसे ही यहाँ पे है। बस कॉर्नर का बस हेयर स्टाइल चेंज किया, कारा का तो फुल मोस्टली चेंज हो ही गया है। कारा थोड़ा अलग सी लग रही थी रियलिटी में और गेम के हिसाब से, लेकिन हैंक को जैसे देखा मैंने, उसकी वॉइस भाई बहुत ज़्यादा कूल है हैंक की। और मैंने कितने लोगों को देखा, और गेम के जैसे पैशन के बारे में बात की है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ गेम, दिस इज़ माइंड एक्सप्लोडिंग, यू नो। जैसे गेम के कैरेक्टर्स ने बताया था कि यार बहुत मेहनत लगती है गेम बनाने में, ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने बनाया है 83 मार्कर्स रहते थे उनके चेहरे पे और सब कुछ एक्सप्रेशंस देने पड़ते थे। तो यहाँ पे इतनी सारी एंडिंग्स थी गेम की, मैंने जो भी एंडिंग चूज़ की है, मैंने पिछले बार भी एंडिंग बहुत सारी खेल रखी है, एंड डैम मैन बहुत सही था। वैसे बोलूँ तो यहाँ पे मैं तो शौक था आधी चीज़ों को देख के, कारा को देख, नॉर्थ अहम नॉर्थ, जैसे उन्होंने मेरे को देखा कि हर एक चीज़ उन्होंने एक्ट किया है, उन्होंने कोई एनिमेशन नहीं किया, उन्होंने बस एनिमेशन को ट्रैक किया है। सो मे बी मार्कस और नॉर्थ ने अहम रियलिटी में भी कर रखा है, यू नो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या फिर उन्होंने मर्ज कर दिया, कुछ भी हो सकता है रेटिंग के बारे में मामले में। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट मुझे लगता है हाँ ठीक है,
Marcus, you lucky guy. Okay, short movie Kara, debut teaser over, discovering Detroit over. अगले एपिसोड में देखेंगे मीट कारा, मार्कस एंड कॉनर. चलो यार, मिलते हैं अगले एपिसोड में. और आई होप सबको एपिसोड पसंद आया होगा. वैसे मैं कुछ पीछे बोल रही, मैं जैसे चाहता हूँ कि मैं बीच मूवी के बीच लाइक ये जो एपिसोड चल रहा था इसके बीच में कुछ ना बोलूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार तुम लोग जो सोच रहे हो, तुम लोग जो देख रहे हो उसे भी मैं डिस्टर्ब कर दूँ बीच में आके अपनी वॉइस से ला के. मैं नहीं चाहता कि तुमको मेरी वॉइस से हेटनेस हो जाए. तो चलो यार, मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these